So without any further delay, let me start the discussion. Okay, देखो, so हम जो आज सीखने वाले हैं, this is the syllabus under unit 1. In unit 1 you can see there are 1, 2 and 3 different 4 different subtopics. In 4 different subtopics, the first is the introduction to that is statistics, biostatistics and frequency distribution. So आज जो है हम लोग यही सारा कुछ जानेंगे. Today I'm going to tell you, just a second, yeah. Today I'm going to tell you that what is statistics, what is biostatistics, and what is the frequency of distribution. So let me first start with. Okay, yeah. Let me first start with the topic statistics. So what is the definition of statistics, sir? So the definition, if I tell you the definition of statistics, this is the science of collection, presentation, analysis, and reasonable interpretation of data. See, collection. सबसे पहले तुम कुछ data collect कर रहे हो, then you are presenting the data, then after that is during presentation or after presentation you are analyzing the data, और last में कुछ जो है reasonable interpretation, उस data से तुम जो है you are interpreting something, you are actually identifying some information. Now sir, किस तरह की information हो सकते हैं? What type of information actually I am getting? For example, you might have collected some data of patients, at least for example like 1000 patients की जो है तुमने data collect किया. क्या data collect किया? 1000 patient की glucose level data तुमने जो है 1000 patients की collect किया. Now out of 1000 patients you have seen that 500 patients having the glucose level than the normal, and you also identified that out of these 500 patients those glucose level is very much high. Okay, among those people there are 50% of the patients are actually aged people, जिनका age मान लो 50 से ज्यादा है, 50 years से जो जिनका age ज्यादा है. So you can very easily correlate or you can very easily come to a conclusion that with passing of age the patients they will be suffering from such kind of that is sugar related problems. ठीक है. So तुमने पहले क्या किया? What you have done at the beginning, you have collected the data, then you have represented the data, then you have analyzed the data, and lastly जो है तुमने conclusion में पहुंचे that yes, if the people's age with increasing of age, the people will be suffering from such kind of diseases. So statistics presents a rigorous scientific method for gaining insight into the data. For example, suppose we measure the weight of there is 100 patients in a study with so many measurements, and simply looking at the data falls to provide a informative account. जो example मैंने यहाँ पे दिया है, same एक और example हम यहाँ पे देख रहे हैं. However, statistics can give you an instant overall picture of data based on the graphical that is a presentation, or numerical sometime summarization irrespective to the number of data point. Besides data summarization, another important task is that is a task of statistics to make inference and predict relation of variables. Now ये जो last की line है, to make inference and predict relation of variable. Relation माने क्या है? With increasing of age जो पर्सन है, जो पॉपुलेशन है और जो पेशेंट्स है, उनमें शुगर रिलेटेड जो डिजीजेस है वो बढ़ने की क्षमता जो है वो ज्यादा हो सकती है. ठीक है. यू आर एक्चुअली कोरिलेटिंग बोथ द थिंग्स. इज इट क्लियर टू यू व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू एज ऑफ नाउ? बच्चों क्लियर है सबको? जस्ट अनम्यूट एंड टेल मी. यस सर. ओके, मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है सारा कुछ? यस सर. प्लीज एनीबॉडी अनम्यूट एंड टेल मी. Yes, sir. Okay, great, thank you. Now देखो, जब भी हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे, when we will talk about statistics, this term that is data will come to the picture. बहुत टाइम जो है हम लोग डेटा और स्टैटिस्टिक्स दोनों को एक ही चीज मान लेते हैं, but no, there are slightly some differences. So data जो है, data consists of information containing from observations, counts, measurements और responses. ठीक है. Now what statistics actually consisting?
स्टैटिस्टिक्स जो है इट्स अ साइंस, इट रिलाइज ऑन न्यू डेटा। स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक साइंस है, वो डेटा के ऊपर जो है वो निर्भर करता है। ये किस तरह की साइंस है? दिस इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, organizing, analyzing and interpreting data in order to make decisions. अभी जो पिछले स्लाइड में हमने देखा था in our this slide that decision, somebody's age is increasing, so you should be much more prone to that is diabetes related diseases. So that's why here you are actually coming to some decisions. So statistics जो है this subject, it will help you to come some decision. Now another thing, पॉपुलेशन। बहुत टाइम तुम देखोगे जब भी हम स्टैटिस्टिक्स इस तरह हम बात करेंगे, तुम देखोगे पॉपुलेशन बार बार जो है शब्द यूज किया गया। नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन सर? पॉपुलेशन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम ऑफ रेस्पॉन्सेस, मेजरमेंट्स एंड काउंट दैट आर ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज सैंपल? देखो पॉपुलेशन एंड सैंपल बहुत टाइम जो है तुम लोग को लगेगा बहुत सिमिलर, बट यस देयर आर स्लाइटली डिफरेंस। क्या है डिफरेंस? दिस इज द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की जो है एक सबसेट है सैंपल, ठीक है। पॉपुलेशन इज इन द टॉप, इसका एक सबसेट जो है वो है सैंपल। तुम्हारे एग्जाम में ऐसे जो है क्वेश्चंस भी आ सकते हैं दैट व्हाट इज डेटा, एक मार्क के क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज पॉपुलेशन, व्हाट इज सैंपल। सो यू शुड बी वेरी मच केयरफुल, ठीक है। नाउ statistical description of data. So statistics क्या करते हैं? What statistics actually describing? It describes a numerical set of data by its center, variability and shape. जो भी हमें जो भी डेटा या जो भी टेबल या whatever the things we will be getting, we can describe all those numerical or all those the data set or numeric set by its center or variability, how much variable it is, or what is the shape, ठीक है। And statistics also describes a categorical set of data by frequency. मैं बताऊंगा what is frequency of distribution. I have a detailed lecture on this. Then percentage or proportion of each category. ठीक है। So all those things you are going to get through your statistics. Now there are few definitions. ये भी तुम लोगों के लिए बहुत important है. All of you should be careful about all those definitions. So maximum time when we analyze some data, or if you're interested in machine learning, in future, many of you will be observing that these kinds of terms like variable, nominal, this thing called ordinal, interval or ratio, ये जो शब्द है, these words will be so much common in many of the that is a lecture or many of the papers. Now what is variable? Any characteristics of an individual or entry, a variable can take different values from different individuals. देखो, you have collected the data of 1000 patients and you are checking their glucose level, जो एग्जांपल हमने शुरू में बताया था ना। तुम देखो इसमें जो है इन ग्लूकोज लेवल जो है हर किसी पेशेंट का सेम नहीं होगा, ठीक है। सो दैट नंबर और दैट डेटा और दैट पर्टिकुलर कॉलम यू कैन से दिस इज एक्चुअली वेरिएबल। नाउ व्हाट इज नॉमिनल? कैटेगोरिकल वेरिएबल with no inherent order or ranking, sequence such as names, class or gender or values may be numerical but without numerical value, जैसे what time roman जो है that is number में भी हो सकते हैं। The only operation that can apply to nominal value of the enumeration. Patient number 1 glucose level जो है 98, patient number 2 glucose level जो है 99, patient number 3 ऐसे करके मान लो 1000 पेशेंट से, ठीक है। तो जो पेशेंट नंबर 1 2 3 इनका कुछ नाम होगा, दैट थिंग एक्चुअली इट कमिंग अंडर नॉमिनल। व्हाट इज ऑर्डिनल? ऑर्डिनल देखो वेरिएबल्स विद एन इनहेरिटेड रैंक एंड ऑर्डर। एग्जांपल लाइक माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। जैसे कोविड में तुमने देखा 3 तरह जो है इन SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 जो SARS-CoV-2 जिनको हो जाते हैं उनको कहते हैं जो डिजीज उसको कहते हैं कोविड। तुमने देखा 3 तरह के जो सिम्टम्स है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। So that thing, that variable that is with an inherent rank, ठीक है, इसको हम कहेंगे ऑर्डिनल। एक और चीज है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली इंटरवल। व्हाट इज इंटरवल? वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आर ऑर्डर्ड as in ordinal and additionally differences between the values are meaningful. However, the scale is not absolutely anchored. Calendar dates, temperature और Fahrenheit जो scale है, all the things are actually coming under your interval. जैसे देखो सेंटीग्रेड
ठीक है, फ़ारेनहाइट और केल्विन, तो ऑल द थिंग एक्चुअली विल बी टेकन अंडर योर इंटरवल। रेशियो बहुत ही आसान है, सब लोगों को पता है। सो वेरिएबल विथ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरवल प्लस एन एब्सोल्यूट और नॉन आर्बिट्ररी 0 पॉइंट। जैसे यहाँ पे भी जो है, इन देयर केस आल्सो योर एज एंड अदर थिंग्स विल बिकम, बट हियर इंटरवल प्लस एन एब्सोल्यूट और नॉन आर्बिट्ररी 0 पॉइंट। नॉन आर्बिट्ररी 0 पॉइंट, वहां पे 0 नहीं, इसके ऊपर होगा, ठीक है। So these are some definitions I have added just to make you that is compatible for your examination. एग्जाम में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, वेरिएबल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, ये सब क्या है, तो तुम लोग जो है एग्जाम में सेम टू सेम जस्ट राइट। नाउ दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग और very important slide, the taxonomy of statistics. Is it clear to your students? Any doubts or anything you want to ask? Acha, how many of you are actually have joined? Because I cannot see. Just a second. Vinod. Okay, 38 students have joined. Okay. बच्चों समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? Who are the participants? Yes, sir. Okay, great. कौन ज्वाइन किया लेक्चर? Just let me see. Abhinav, Abhishek, then yeah, Ambe, Karan, Nitin, Pratibha, Shanuj, Varsha. ठीक है, चलो. Now let me start with the a very interesting thing, that is taxonomy of statistics. See, statistics को जो है तुम दो तरीके से जो है, in two different way you can categorize. What happened? Screen visible हो रहा है बच्चों? मुझे लग तो नहीं रहा है. Can you see the screen? Yes, sir. एक बार मुझे कंफर्म करो, स्क्रीन में तुम लोग क्या दिख पा रहे हो? The settings page. अभी आ रहा होगा ना? Taxonomy of Statistics. Yes. Great. यहाँ पे कुछ जो है डिस्कनेक्शन हो. ओके, देखो, सो स्टैटिस्टिक जो है, you can categorize or you can classify or you can, if I say in the form of taxonomy, it will be two different way. First, descriptive, then inferential. Descriptive में जो है, in your descriptive also there will be three different types. One is the univariate, then bivariate and multivariate. In univariate also, shape, centers, spread और relation position. तुम लोगों के लिए सारे शब्द जो है बहुत नए लग रहे होंगे. For the first time you might be listening, you might be thinking, sir, इतना difficult है, क्या है? Don't worry, these things are very easy. You may just listen the lecture. With passing of time, you'll be understanding these things are very easy. So univariate and in bivariate, देखो bivariate में क्या होगा? There will be correlation, age and that is a glucose level, in दोनों के बीच correlation. Then regression में क्या होगा? For example, like if I draw a that means that is a graph, if this is x, this is y, यहाँ पे अगर मैं age कहो और यहाँ पे for example patients की जो है that means glucose level को मैं draw करूँ, तो almost कुछ ऐसा होगा ना, like this, है ना? कुछ केसेस में शायद तो कम भी हो सकते हैं. तो if you make some regression point, I think तुम लोगों ने एक्सेल शीट में किए होंगे regression. So that thing will be you can also predict with passing of age, और जो young people है उनमें ग्लूकोज लेवल कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं. You can that means make some prediction. मल्टीपल रिग्रेशन, वहां पे मल्टीपल डाटा पॉइंट होंगे, एक्स वाई एक और जेड तुम इसमें ऐड कर दो, मल्टीपल डाटा पॉइंट. ठीक है. सो डेस्क्रिप्टिव और देखो, जस्ट अ सेकेंड, देखो मैंने यहाँ पे कोरिलेशन इसलिए मैंने स्टार्ट किया बिकॉज earlier we have seen the correlation between patient age and glucose level, GLUCOS. But in univariate there will be only one thing, either it will be in the shape form or the data will be in the center or it might be in the spread position or relative position. ठीक है, यहाँ पे जो सिंगल डाटा होगा,
यहाँ पे जो है सिर्फ x होगा, x. In this case you have seen xy. In this case there might be xy and z. ठीक है, मैं बताऊंगा और भी डिटेल्स में. For your understanding, just see what are the things. Inferential methods applied to means, or there are other statistics like ML, machine learning, ये सारा जो इसमें आ जाएगा. यहाँ पे भी जो है there are two groups, or ANOVA, analysis of variance. ANOVA is analysis of variance. यहाँ पे in two groups में there are t-test and another thing is called desk group t-test. ओके, तुम्हारे सिलेबस में जो एनोवा है और t-test है, हम लोग ये सीखेंगे इन आवर यूनिट आई थिंक 4 या यूनिट 4 में आई थिंक ये सारा कुछ है. ठीक है, सो यू मे जस्ट रिमेंबर that you can classify the statistics in two different ways, descriptive and inferential. In descriptive, first is the univariate, then bivariate and multivariate. Univariate may be shapes, center, spread, or relative position. In bivariate, correlation or regression. And in multivariate, this thing should be multiple regression. And in inferential methods, there are two types applied to means or used to other statistics like machine learning. Or you can do here two groups. What are the things? T-test and desk group test. Depth group test, and another is the ANOVA, analysis of variance. ठीक है. Now कुछ एग्जांपल देख लेते. अभी तक जो हमने बात किया कुछ एग्जांपल देख लेते. चलो, फॉर एग्जांपल रिसेंट सर्वे 250 college students at a union college were asked if they smoke cigarette regularly. 35 of students said yes. Now identify the population of the sample. तुमने जो है सबको रेंडमली पूछा. मान लो तुम्हारे कॉलेज में, पीडीएम कॉलेजेस में, तुमने जो है सबको रेंडमली तुमने पूछा कि भाई आप सिगरेट जो है स्मोक करते हो. Many of the people said that no, many of the people might be saying yes. Now you have to represent the data. You have to tell the population of the sample. कैसे होगा? Like this. For example, this is the response. ये जो तुम देख रहे हो, this entire box. For example, you are actually representing the entire data in the form of box. यहाँ पे अगर तुम नंबर ढूंढो, यहाँ पे if you just think all the dots, all the points, यहाँ पे जो डेटा है, सारा जो डेटा पॉइंट है, if you just see them as a dot, ठीक है, तो क्या होगा? This is the entire all the students of Union College population. And just a second. And among all the students, this is the response of the students in survey, that is sample. Particular this percentage of students जो है, they have given the response that yes, they are smoked cigarettes regularly. ठीक है, माने 35%, या 30%, या 35 out of 250. So अगर तुम पूरा जो है इसको अगर तुम बॉक्स अगर तुम देखो, only a certain number of people actually that is smoking. So this is how we're actually representing our data. ठीक है. Let me take to you another few points. One is parameter, another is the statistics. Now, what is parameter, sir? A parameter is a numerical description of a population characteristics. And if I tell you statistics, it is also a numerical description with a simple characteristic, sample characteristics. ठीक है, हमने पहले हमने क्या देखा था in our that earlier thing. If I tell the correlation, so parameter will be take to you to the population. And statistics, that is statistics will take you to the sample. So that's the correlation between parameter and population and statistics and sample. I hope अभी तक जितने भी हमने डिस्कशन किए from just a second, let me just remove the inks. I hope whatever the things I have discussed as of now since the beginning of my lecture where I have started with these things, बहुत सारे नए शब्द तुम लोगों ने सुने, lots of new words that you have listened, and you also have seen that what is the meaning. You have seen the data, you sorry, you have seen this term called data, then you have seen statistics, you have seen population, and you have seen sample. Data, statistics, population, and sample. Those of you who have joined slightly late, for you I am telling again. Then you have also seen variable, nominal, ordinal, interval, ratio. इसके बाद जो है तुम लोगों ने देखा, after that after that you have seen the taxonomy. यहाँ पे भी कुछ नए शब्द तुम लोगों ने देखे.
univariate, bivariate, multivariate, and you also have seen that is a t-test and ANOVA. After that, after that, we also have seen one example, and we also have covered few other that is a correlation. What are the correlation between parameter and population statistics and sample? Now, after learning all those things, now let me tell you what are the major branches of statistics. Achha, do you have any question till now? Anybody having any question? 44 of you have joined. कौन-कौन है क्लास में? I can see Abhishek, Ambe, Abhinav, Dipanjan, then Chetan, Jaya, Karan, Nitin. Any questions, students? Vinod has also joined. समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अच्छा, how many of you are listening this lecture? You may just raise your hands so that I can understand कि हाँ तुम लोग वाकई जो lecture सुन रहे हो. Is it boring or or is it that is a simple? देखो ये जो टॉपिक है ना, डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टॉपिक. जो बायोस्टैटिस्टिक्स है, इसका एक एनपीटीएल कोर्स भी है. मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे साथ की मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत सारे जो है कॉलीग्स दे आल्सो हैव जॉइंड फॉर द कोर्स ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इन एनपीटीएल. बहुत लोग जिसमें पास नहीं हो पाए. ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, ये मैं मान रहा हूँ, ठीक है, पर मेरा कोशिश ये है बहुत सिंपल भाषा में तुम लोगों को जो है मैं ये चीज सिखाऊं ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो. ठीक है. There is some issue. Smart view. Mirror. Okay. Now, the big question: what are the branches of statistics? So there are two different major branches of statistics. One is the descriptive statistics and another is the inferential statistics. हम लोगों ने पहले भी अभी जो है देखा था मैंने in that chart I have also given you the taxonomy. Now let me tell you with much more detail. देखो descriptive जो है this will involve the organization, summarization and display the data. यहाँ पे तुम describe कर रहे हो, ठीक है. Here whatever the data you're getting actually that is organizing all the data, then you're summarizing, you are taking the meaningful that is a data point and you are actually displaying the data. अभी हम लोगों ने in our that slide that slide यहाँ पे जो हमने देखा था this thing is actually displaying the data, माने डेटा को जो हमने रिप्रेजेंट किया था इस फॉर्म में बॉक्स एंड योर दिस शेप. ठीक है. Just a second. Now, so now the biggest question: what is the inferential statistics? इसमें क्या होते हैं? It involves using a sample to draw conclusion about a population. This is actually involving a sample to draw conclusion by population. Certain population, certain percentage of people actually are taking cigarette, or they are highly addicted with some cocaine or other kinds of sample or other kinds of substances. So we're actually reaching a conclusion by doing the inferential statistics. Now हम classify कैसे करेंगे? How we may classify the data? We have seen what is data, we have seen what is statistics, how both of them are actually correlate. We have seen the sample, population and other things. Now the biggest question: how we can classify our data? So the data is also in two types. One is this thing we call qualitative data and another is the quantitative data. Obviously नाम से तुम लोग को पता लगा होगा, क्वालिटेटिव डेटा में जो है वहां पे एट्रीब्यूट्स होंगे, लेबल्स होंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल तुम्हारे क्लास में जितने बच्चे जितने भी तुम लोग स्टूडेंट्स हो, some of you are actually girls and remaining people are actually boys. So qualitative attribute girls or boys. Some people are from Delhi and some people are actually from Haryana. ठीक है. So attribute I can say attribute or label in this manner: Delhi, Haryana. ठीक है.
see in this case this will be non numerical. अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ गर्ल्स एंड बॉयज दिल्ली और हरियाणा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं आएगा. I cannot tell that Delhi is 2 etc etc. नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे. So these things will be called as a qualitative data. मैं अगर और भी डिटेल्स में बताऊँ, हमारे क्लास में मान लो 5 स्टूडेंट्स हैं. रोल नंबर 1 फॉर एग्जांपल, रोल नंबर 1 इज विनोद. रोल नंबर 2 फॉर एग्जांपल, रोल नंबर 2 इज साक्षी. रोल नंबर 3 फॉर एग्जांपल, दिस इज Chetan, Chetan. Then roll number 4 is Himanshi, and roll number 5 for example is like कौन है यहाँ पे, Ambe. So Vinod is a boy, Sakshi is a girl, Chetan is a boy, Himanshi is a girl, Ambe is a boy. So यहाँ पे जो in your this column whatever I have written, that thing, that data is actually qualitative data. अगर मैं कहूँ कि कौन कहाँ से, if I tell about your city, for example, Vinod is from Haryana, Sakshi is from Delhi, Chetan is from Haryana, Himanshi is from Delhi, Ambe is from Haryana. So again these points, यहाँ पे जो कोई नंबर नहीं, देखो यहाँ पे जो है कोई भी नंबर नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा कुछ है नहीं. So that thing will be called as a qualitative data. ठीक है. If I tell you about the quantitative, यहाँ पे नंबर आएगा. In that case there will be number. अगर मैं सेम एग्जांपल लो, रोल नंबर 1 में तो इसको हटा दिया. रोल नंबर 1 मान लो चेतन, रोल नंबर 1 2 3 4 एंड 5, 5 स्टूडेंट्स है तुम्हारे क्लास में. मान लो मेरे सब्जेक्ट में किसी को मिला, रोल नंबर 1 को मिला 80, किसी दूसरे बच्चे को मिला 70, somebody got 90, another person got 91, और किसी और को मिला मान लो 95. So this number, ठीक है, this number it will be called as a quantitative data. Clear everyone, students? Please unmute and Yes, tell sir. me. Okay, great. Yes, sir. Great. So यहाँ पे मैंने mention किया हुआ है. I hope it is very much clear to you all. That is in grade point. देखो यहाँ पे जो है, अच्छा तुम लोग बताओ, ये जो मैंने यहाँ पे mention किया हुआ है, this is qualitative or this is quantitative? This is qualitative or quantitative? बताओ. Quantitative, sir. Quantitative. Very good, very good. And this one, this is the qualitative, है ना? Yes, sir. Great. Let me remove the inks. Yeah. Now let me take to you much more detail level of measurements. How you will measure the data. So the level of measurements determines the statistical calculation meaningful. हमने देखा था थोड़ा बहुत, हमने देखा था nominal, ordinal, interval and ratio. इनके बारे में थोड़ा हमने जो है at the beginning of my lecture I have told you. Now it's time to tell you in detail. Yeah. So level of measurements, how we may measure the data. So these things, nominal, then your ordinal, then your interval and ratio. All these things will be come to the picture. Now the question is, sir, kaise or how they are actually organized? The answer is lowest to highest. Nominal data or nominal types measurements will be the lowest. Ratio is the highest. Do I have any kinds of yeah? देखो nominal क्या होते हैं? What is nominal or how the things are associated with nominal? Calculated using names, level or qualities. No mathematical computation actually made in this level. जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया था क्लास में, रोल नंबर 1 2 3 4 5 जो स्टूडेंट्स है ना, somebody is boy girl, sorry, boy girl. So these are the things nominal. In that level there will be no any mathematical computation. यहाँ पे कोई जो है मैथ नहीं होगा. Why? It is not possible because here data is actually in the names of level. Oh. How to remove the ink? I do not have any. Let me see. Just a second. मैं actually जो है ना अपने टैब में लेक्चर को ले रहा हूँ. I do not know how to remove the ink so quickly. There might be some option. Anyway. So for example, और भी अगर डिटेल्स में बताओ, जैसे कलर्स इन यूएस फ्लैग, नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास जो बताया मैंने अभी, और टेक्स्ट बुक यू आर एक्चुअली यूजिंग दिस सेमेस्टर. सो ये सारे जो है ये सारा नॉमिनल कहेंगे हम इनको, नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट्स. नाउ ऑर्डिनल, व्हाट इज ऑर्डिनल सर? ऑर्डिनल में क्या क्या आएगा? अरेंज्ड इन ऑर्डर
but differences between data entries are not meaningful. कैसे? For example, class standing. कुछ हमारे सोसाइटी में जो है मतलब या फिर तुम्हारे क्लास में मान लो somebody is the fresher, कोई नया नया है, somebody is recently newly, then this thing called sophomore or your junior senior. Now इसमें जो है इसमें देखो data entries are not highly this actually difference between data entries are not so meaningful, arranged in order, ये सारा चीज जो arranged थी, but यहाँ पे जो है you can see senior and junior both of them will be slightly different than other, है ना? Then number of that is a back of each player shirt, or you can see top 50 played songs in your that is on radio or in your playlist. Okay, so these kinds of data or these kinds of measurements will be actually calling it as a ordinal. Okay, now another type of data I have told you, this thing called interval. Here arranged in order, the difference between the data entry can be calculated. यहाँ पे जो है you can be able to calculate कैसे, for example temperature, year on timeline, or for example scores, world series or other kinds of victories, whatever you can calculate. ठीक है, so that kinds of measurements, that kinds of level of measurement we may call it as a interval. And the last, what is the thing? Last is the ratio. Ratio is the ratio of two data values can be formed, so one data value can be expressed as a ratio. कैसे? Let me show you. Yeah, कैसे? How? For example, ages, then your grade point average, or your weight. ठीक है, ages, some you are actually comparing with two different values. The ratio of two data values can be formed, so one data value can be expressed as the ratio. So this is how you can that is measure, or you can that is levelize, you can make the level of measurement. इसको अगर summary देखिए, if we see the summary, yeah, so in nominal case, in case of nominal, whatever the data you are actually putting, data put in category, answer is yes, because in nominal के केस में हमने क्या देखा था, boys girls इस तरह की जो है डिफरेंस होंगे. Now ये जो डेटा है, whatever the we have collected or we have measured the data, whether it is arranged order, answer is no. Subtract value अगर arranged order में नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे जो है subtract हम नहीं कर सकते, है ना, माइनस जो है हम इसमें नहीं कर सकते. Determine if one data value is multiple of another, answer is no. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, टेल द डिफरेंसेस बिटवीन नॉमिनल, ऑर्डिनल और अदर थिंग्स. एंड ऑर्डिनल में केस में यस कैटेगरी में तो आएगा, बट ये जो है अरेंज ऑर्डर में भी रहेगा, बट यू कैन नॉट सब्सट्रैक्ट, बिकॉज वहां पे सीनियर जूनियर उस तरह का एग्जांपल था. और ऑल्सो let me tell you more. In interval, this is the most amazing thing. In interval, everything will be yes except that thing. Determine one value, one data value is a multiple another. Answer is no. क्योंकि यहाँ पे कोई रेशियो जो है हमें जो यहाँ पे रेशियो मिल नहीं रहा है. In ratio, everything will be yes. So if you remember this chart, you may take one screenshot. तुम्हारे एग्जाम में जो है इनके बीच में डिफरेंस जो इसमें पूछा जा सकता है. Okay, so that's it from my side for the first topic, that is introduction to statistics.